Barbell squat is the best workout. You are wrong. Like best workout. Let me explain. If you think barbell squat is the best workout for your legs, then you are wrong. Barbell squat एक legs के लिए एक best workout नहीं है guys, and it's not at all suggestible for beginners. Let me explain. So guys, welcome to our channel. This is Sanjeev. Without any bias, let's do the video. Barbell squat एक demanding compound movement है guys. It's like it not only you will involve your legs, it involves so many other muscles. So जब आप अगर आपको एक workout करना है, first you have to master in your stability, mobility, flexibility and your core strength. आपके ankle joint में अच्छा mobility चाहिए, आपके hip joint में अच्छा mobility चाहिए, आपके hands में अच्छा flexibility चाहिए and strength in the core to resist the activity what you are doing. जब आप कर रहे हो वो वर्कआउट, जब आप कंप्लीट इफ यू आर डूइंग विद वेट्स एंड ऑल दोस थिंग्स, ये सब प्रॉपर फॉर्म में करने के लिए यू हैव टू फर्स्ट मास्टर ऑन ऑल दिस, लाइक जो भी मैंने बताया. अगर आप इसके बगैर इफ यू आर गोइंग डायरेक्टली यू आर गोइंग एंड हिटिंग द बारबल स्क्वाट जो एक कंपाउंड मूवमेंट है और आपके कोर में स्ट्रेंथ बराबर नहीं है, यू विल बी लाइक बेंडिंग मोर फॉरवर्ड. अगर आपके पास हिप मोबिलिटी नहीं है, आपका बैक इन्वॉल्व कर दोगे. आपका एंकल मोबिलिटी नहीं है, नी सामने जाके ज़्यादा वो इन्वॉल्व हो जाएंगे. सो एंड यू मे लैंड अप विथ सम इंजरीज गाइस. सो व्हाट आर द बेस्ट अल्टरनेटिव्स? बहुत सारे वर्कआउट्स है जो विदाउट बारबल स्क्वाट्स, विदाउट दिस कंपाउंड मूवमेंट आल्सो यू कैन डेवलप योर लेग्स. सो आई विल शो यू फ्यू वर्कआउट्स विच आर देन योर बारबल स्क्वाट्स फॉर बिगिनर्स. हाँ, वो वर्कआउट्स कर लेते हुए अगर आप थोड़े अपने मोबिलिटी पे, अपने फ्लेक्सिबिलिटी पे काम करके वंस यू मास्टर ऑल दोस थिंग्स यू कैन involve this workout also in your program. So the first alternative for your barbell squats is your vertical leg press guys. See in this machine you can see his posture. He is lying down. ये पूरे लेट के अपने पूरे अपर बॉडी को रिलैक्स करके he is only using the legs. So इससे क्या होगा? It won't be a like compound movement. It's like you are isolating your legs and it is will be safe. And machines are biomechanically designed to keep you safe. And better alternative is your लेग एक्सटेंशन मशीन गाइस. आपने देखा होगा बहुत से जिमों में ये मशीन होता है. यहाँ पे यू कैन सी दिस वन इज प्लेट लोडेड बट यू विल फाइंड पिन लोडेड जो मशीन में ऑलरेडी वेट्स होते हैं. दैट इज वेरी कॉमन मशीन. सो दिस इज आल्सो अल्टरनेटिव फॉर योर बारबल स्क्वाट्स एंड टू डेवलप योर क्वाड्स. इट विल हिट डायरेक्टली योर क्वाड. इसमें बहुत सारे वेराइटीज होते हैं. अगर आपके पास कोई अच्छा ट्रेनर है ही कैन मॉडिफाई द वर्कआउट्स इन मेनी वेज. थर्ड अल्टरनेटिव इज योर हैक स्क्वाट मशीन. अगर ये मशीन आपके जिम में है सो गो दिस मशीन. It is one of the best machine to hit your quads without any further muscle involvement. A pure isolation देगा guys. You can see his movement. There is no involvement of his back or knees or anything. You can purely involve your quads and you can develop your quads without the barbell squat. थोड़े से alternative workouts थे आपके barbell squats के. Guys इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ यही workouts करते रहना है और completely ignore the barbell squats and complete ignore working on your mobility and stability. So these are the workouts for beginners जो starting stage में है, who are not master in their mobility and stability. So इसके लिए आप क्या करना है guys? पहले आप you have to work on the problems like go to your trainer, ask him to conduct an assessment on you. वो एक बार assessment करके आपको बोलेगा कि ये muscles आपके hip tight है, आपके ankle movement है, then go for the mobility first, mobility, stability और core strength पे काम करिए, then to add the compound movement in your routine because machines have their pros and cons and compound movements also having their pros and cons. So guys उसके benefit उसको रहेंगे, इसके benefit इसको रहेंगे. So first you have to concentrate on your and all those things, then again add the compound movement. It will be safe for you. So guys hope ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा. अगर पसंद आया तो प्लीज गो एंड हिट द लाइक बटन फर्स्ट. इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए एंड प्लीज subscribe to my channel. Okay guys, stay natural, stay healthy, stay fit. Bye.